Hello dear students. So as you all know, we have completed the fourth chapter, air, chapter 4, air. Okay, and this chapter now we will be discussing the question and answers. I know you all always like discussing the question and answers, so just for that reason I have taken this out here, and we will be discussing about the major points that are there in the chapter in the form of question answers. Now again I would like to request you that what is mentioned here, यहाँ पे जो चीज़ mention है, don't mention only that. Very small, very short answers are there. थोड़ा सा एक दो लाइन आपको अपनी तरफ से भी इसमें ऐड करना है. You have to add some more points from your side. Okay. So here is this chapter 4, air, and we will be discussing the question answers. What is the first question? Is atmosphere. हाँ, अभी of course it's a small answer. The air is surrounded by a huge the earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. Here I would like you to mention in the second question you can definitely mention. First question में तो you have mentioned about the huge blanket of air that is called as atmosphere. आप एटमॉस्फेयर के बारे में आप बताओगे, एयर के बारे में आप बता रहे हो. सेकंड क्वेश्चन जो है ना, इसमें आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग फ्रॉम माय साइड. वो बताती हूँ. विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर? ओके, सबसे ज्यादा कौन सा गैस है एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. My addition to this is please mention about the other gases also. इन्होंने पूछा है अदर गैसेस. आप इन्होंने पूछा बल्क. बल्क मतलब सबसे ज्यादा. वॉट एवर गैसेज आर अवेलेबल इन द एटमोसफेयर इन बल्क, जो ज्यादा मात्रा में है आप उसके बारे में दोगे. बट आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू कि प्लीज मेंशन अबाउट द गैसेस which are in less amount also in the atmosphere. तो आप उसमें बताओ क्या क्या था. आर्गन था एंड हीलियम था, बहुत सारे. देयर वर मेनी. द डायग्राम दैट वाज देयर, सो यू फ्रॉम दैट डायग्राम यू कैन सी द अदर गैसेस दैट आर देयर इन द नेचर. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दीज गैसेस which are used by the human beings. बहुत ज्यादा मात्रा में हम जो यूज कर रहे हैं, हम इनहेल क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन. लेकिन हम एक्सेल कर रहे हैं. एंड देन द अदर गैसेस विच आर देयर विच आर वेरी यूजफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स. काफी हम इन गैसेस के बिना भी हमारा काम नहीं चलेगा. वी कैन नॉट डू विदाउट दीज गैसेस. इसको भी आपको बताना है. ओके, अभी यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट. विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो एक लाइन में इन्होंने बता दिया कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट. गॉट इट? लेकिन आप उसको एक्सप्लेन करो ना. प्लीज एक्सप्लेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज देयर इन द एयर दैट इज क्रिएटिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट. बट हाउ इज इट क्रिएटिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट? रिमेंबर द बॉक्स दैट इज देयर. जहां पे चैप्टर शुरू हो रहा है बिल्कुल वहीं पे वो बॉक्स दिया हुआ है. That the solar energy, the fumes and the polluted air and the pollution that is there, the solar energy ये जो आती है इसके वजह से बहुत सारा हीट जो है हम एब्जॉर्ब हो जाता है. and as a result what happens, it creates a greenhouse effect. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का वो जो एक्सप्लेनेशन था उसमें से भी प्लीज राइट 1 or 2 पॉइंट्स. डोंट जस्ट फॉलो दिस. खाली इसको फॉलो मत करना, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा सही नहीं है. जस्ट फॉर द डिस्कशन पर्पज आई हैव टेकन इट आउट. फॉर द आइडिया आई हैव गिवन इट चिल्ड्रन. लेकिन इसको आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. डू इट एज पर गिवन इन द बुक, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कहाँ से पढ़ना है? यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द बुक ओनली. तो दिस वॉज जस्ट एन आइडिया टू डिस्कस इट. ओके, देन द वेदर. वेदर क्या है? व्हाट इज वेदर? इसमें आप एक चीज और ऐड कर देना, वेदर एंड
climate? Please add it from your side. मेरे तरफ से, because I am asking, that's why please add it. Okay. वेदर क्या है? शॉर्ट टर्म है. इट इज द शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमोस्फेयर, जहाँ पे हॉट है, कोल्ड है, वेट है, ड्राई. I mean all through the day the weather changes that are happening, the phenomena that is changing. तो it is hour to hour, हर एक घंटे में जो वेदर जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है in our environment, in our atmosphere, that is called as weather. Climate क्या है फिर? What is climate? Yes, climate is that phenomena where the changes, season changes happen. सर्दी, गर्मी, बरसात, हाँ, वसंत, बहुत सारे हैं. Many are there. And we are really lucky to stay in a country where we are witnessing all the weather phenomena. जो भी मौसम चेंज होता है हम उसको पूरा एंजॉय करते हैं. गर्मी आती है, कितना एंजॉय करते हैं. हाँ, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल इट इज देयर, बट देन विंटर्स आर अगेन सो गुड. एक तो यू गेट सच गुड फूड टू ईट, इजंट इट? आई वाज जस्ट टॉकिंग, ऐसे ही दिमाग में बात आई, सो आई वाज जस्ट शेयरिंग इट विथ यू. तो you talk about weather and you talk about climate. Okay, now name 3 types of rainfall, and here I am adding and explain it also. Okay, and then we have also discussed about the diagram also. Remember those diagrams: convectional rainfall, orographic rainfall and cyclonic rainfall. वो the diagram that was there, through those diagrams, the discussions that we have done, you need to mention about it. क्या क्या था? Where the warm air meets with the cold air, and बहुत तेज the air speed is very high. So we have the cyclonic rainfall. Orographic rainfall is on the hills. Okay, the moisture laden air when rises up, पूरा moisture से भरा हुआ air is going up, and when it is meeting the cold weather there, तो clouds are formed, and these clouds then come down in the form of rains. फिर ये बारिश जब होती है, that is called as orographic rainfall. Okay children, then you have the convectional rainfall. Convectional rainfall, simple, on the bed of the ocean bed पे क्या होता है? It is all water. So when this water gets heated up, तो water when gets heated up, this vapor, the droplets, they go up. ये जो droplets ऊपर जाते हैं in the form of पूरा, it is all filled with moisture, filled with water. These droplets go up and then it comes down. Okay, आप ये देख लो यहाँ पे, suppose this is ocean. Okay, and it is going up. Vapor is going up. This is ocean, and then vapor is going up. यहाँ पे जाके, just a minute children, ठीक है, and here whether the clouds are formed. Okay, clouds are formed here, and then the rains come down. Okay, ये जो नीचे से जो वेपर ऊपर गया है उसी में क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, एंड देन इट कम्स डाउन जब व्हेन द क्लाउड्स कुड नॉट होल्ड द वाटर एनीमोर, पानी को ज़्यादा देर तक रोक के नहीं रख सकते हैं. ओके, सो दिस इज देयर. ओरोग्राफिक में यू नो हिल्स आर हियर, एंड द moisture laden air goes up, and here the clouds are formed, and then the rain is there. Rainy season comes down. Okay, इसके बाद air pressure. What is air pressure? You know it very well. The pressure that is exerted by the weight of air. काफ़ी सारी हवा है, तो because of this air what happens, a high pressure is always there, काफ़ी ज़्यादा. लो प्रेशर कब होता है? when this air gets heated up. and कहाँ पे है? I'm sorry children, weight of air is differing from place to place.
So this weight of air that is differing from place to place, it is called as the air low pressure and high pressure. High pressure जहाँ पे the air is in an intact manner. Intact मतलब पूरा ठंडी के वजह से जमा हुआ होता है. तो क्या होता है, that the air has got more pressure there, that is why it is called as the high pressure. Then it comes down in the form then it comes towards the low pressure, क्योंकि low pressure में क्या होता है, air is always expanding, हमेशा heat रहता है. तो these heated air meets with the cold air, फिर उसमें फिर again cloud formation and rain and all this phenomena occurs. Okay. इसके बाद you have the MCQs. Which of the following gases protect us from harmful sun rays? Yes children, it is very clearly mentioned here, it is the ozone. Then most important layer of atmosphere, yes children, it is troposphere. Clouds कहाँ पे नहीं है? Where you don't have clouds? Clouds you don't have at stratosphere, so it is very easy for the planes to fly. कभी कभी clouds आ जाते हैं बारिश के मौसम में. Clouds इतने सारे फॉर्म होते हैं, इतना बादल फॉर्म होता है that these clouds are filled, stratosphere तक clouds पहुँच जाते हैं. फिर क्या होता है, then there is air turbulence. वो the aeroplane that is flying ना अचानक से हिलने लगता है. It's very scary. But it is because of the excessive of clouds filled with water. But planes fly, ऐसी बात नहीं है. बहुत there are the trained pilots that take care of that. So stratosphere आपने मार्क कर लिया. Next क्या है? When we go up the layer of the atmosphere, the pressure, atmosphere से जब हम ऊपर जाते हैं, okay, the pressure decreases. Okay. सबसे ज़्यादा नीचे में प्रेशर होता है because because of the gravitational pull. Okay. Then you have when precipitation comes down to the earth in the liquid form. Liquid form में ये the air that is filled with droplets of water, it is called as precipitation. When it comes down in the liquid form, it is called as rain. Match the following children. You can very well do it. Here you have so many words. Trade winds क्या है? Loo. What is loo? What is trade winds? What is monsoon and what is wind? Okay, so trade winds are the permanent winds. Loo क्या है? What is loo? हाँ, loo you will witness at some places. हर जगह पे आपको loo नहीं मिलेगी. So when you are witnessing loo at some places, it is called as the local winds. Monsoon क्या है? Monsoon is seasonal wind. Monsoon में you will find the seasonal wind. उस तरह की हवा मतलब will filled with lot of moisture you will find only in the seasonal in the certain seasons only. Then wind is the horizontal movement of air. Horizontal, हवा बह रही है तो ऐसे बहती है. Horizontal, हवा ऐसे नहीं बहती है. This is vertical. Got it? तो हवा जब बहती है तो ऐसे ऐसे बहती है, isn't it? Just I was explaining it to you in a simple manner. अभी reasons आपको बताना है. Wet clothes take longer time to dry in humid day. क्यों होता है? Humid day में humidity is very high. हाँ, water droplets जो है atmosphere में बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहता है. तो क्या होता है? The level of water vapor in the atmosphere is high. And as a result what happens, air is not able to carry away more water vapor. Air could not carry much water vapor. So the clothes, they are taking long time to dry on a humid day. बहुत ज़्यादा humid weather होता है, तो it is very difficult for the clothes to dry. Got it children? So we need to understand that. Next क्या है? Amount of insolation decreases from equator towards the pole. Insolation, trapping the heat from the sun. ठीक है, sun की energy जब हम capture करते हैं, when the earth captures the energy of the sun, that is called as insolation.
and it is the coming solar energy intercepted by the earth. Sunlight is falling almost vertically on the equator. This is earth and this is sun. I have already explained it to you. Again I'll make this picture. I love making sun. तो ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज, और यहाँ पे सन की सबसे कम हीट पहुंच रही है पोल पे, तो इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. हीट यहाँ पे पहुंच ही नहीं रही है, तो यहाँ हमेशा बर्फ रहेगी और यहाँ पे हमेशा हवा लो रहेगी. हवा क्योंकि बिकॉज इट इज एक्सट्रीम हीट. एक्सट्रीम हीट में क्या होता है, हवा जो है लगातार बहती रहती. So we have completed the chapter, children. We have discussed the question answers, children. Now we will be starting a new chapter, history, chapter 5. We will be starting, and that is the, I think it is buildings, rulers and buildings. So let's start the chapter. Thank you, children, and all the best to you. Hello students, welcome to today's class. As you all know, we have completed the fourth chapter in geography, air. We discussed the question answers just now. So children, here I am with the new chapter. So this is an introduction video to a new chapter, history, chapter 5, rulers and buildings. Okay. One of the very interesting chapters. अभी इसके पहले you have read about chapter 4. Chapter 4 में हमने क्या पढ़ा था? What did we study in chapter 4? We studied about the Mughal Empire. Now today we are starting this new chapter, which is rulers and buildings. Now children, please try to understand that the earliest buildings that we have, ancient buildings that we have. Ancient buildings में हम किस buildings की बात करते हैं? We talk about which kind of buildings when we talk about the ancient buildings? We talk about temples. Temples are there, mosques are there, बहुत सारे buildings हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं. But certain buildings are there in India which is like our identity. Yes children, believe me, some of the buildings are our identity. यहाँ पे पता नहीं चलता है. You don't understand here. But I know you all are brilliant students. Someday you go to some foreign nation. Someday you go to some foreign country. God bless you all. हो सकता है कभी कोई लंदन जाए, या you go to New York, you get your higher education there, या फिर कुछ business करते हैं आप. कल को जब आप बड़े होंगे, when you go there, you interact with people, isn't it? You do that ना. कितने सारे लोगों के साथ आप मिलते हैं. So you are in London or you are in New York. There you interact with the people. जिन लोगों के साथ आप interact करते हो, they will ask you, oh hello Mr. this. Okay, suppose hello Mr. Ayan. You are from which country? So you will say I'm from India. Oh, you are from India, where you have the Taj Mahal. Then you understand, my God, I belong to a country which is known because of Taj Mahal. Got it, children? That's the importance and that's the identity of a person because of the building. इंडिया को लोग नहीं जानते हैं, आपको लोग नहीं जानते हैं, लेकिन लोग किसको जानते हैं? ताजमहल. The person recognized you that you are from the country where you have Taj Mahal. So you can understand how important the buildings are. Just now I told you that it is your identity. So when you start the chapter, when we start the chapter, children, we have the first picture which talks about Qutub Minar. सुना है? देखा है? Many of you might have seen it. Delhi कभी जाओ तो whenever you get a chance to go to Delhi, so you can visit Qutub Minar, one of the very eminent buildings in India, which Indians are very fond of. It is it was made by Qutub Minar. किसने बनाया था? Qutbuddin Aibak. Okay. He started it.
Qutbuddin Aibak, the ruler of the slave dynasty. He is the founder of the slave dynasty. ठीक है, slaves, you know, मतलब जो यहाँ के जो the people who had come here as rulers, or the people who had come here as the people like जैसे Porus was there, हाँ, Alexander was there. These rulers who came, उनके साथ ये कुछ some of their very trusted generals were like slaves. और उन स्लेव्स को वो क्या करते थे, इतने खुश हो जाते थे अपने स्लेव्स के साथ. दे यूज्ड टू बी सो हैप्पी विद देयर स्लेव्स कि पूरा का पूरा एम्पायर उनको दे देते थे. यस, बिलीव मी. सो कुतुबुद्दीन ऐबक हैज कंस्ट्रक्टेड, एंड इन विच ईयर? अराउंड 1199. तो पैटर्न आप देखना, यू विल सी द पिक्चर दैट इज देयर. Under the balcony, small ark is there, geometrical design is there. Ark किसको कहते हैं? This is ark. Got it? Ark है. Geometrical design, geometry में क्या होता है? You have a triangle, you have a square, you have a rectangle. Got it? तो ये जो है, these kind of structures are found in Qutub Minar. Now what happens when you see the two bands of inscriptions? मतलब the building that is there, the Qutub Minar that is there, lot of things are engraved. बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं. And what language is used there? The written language in the Qutub Minar is Arabic. It is all written in Arabic. Those who know Arabic can easily understand क्या लिखा हुआ है. And then you will notice the surface of the minar. It is curved. हाँ, जो नीचे का part है, the lower portion that is there, that is curved and angular. हाँ, एक तो मुड़ा हुआ है plus angular. Angle बना हुआ है. You can understand that this is an angle. So this way, these kind of things have been there, where it is curved at below, and then there is angular design also. So when we see the minar, it is curved and angular. Inscription is there on a surface. Great precision. बहुत बारीकी से काम किया गया है. छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान दिया गया है. Try to understand, that is precision. तो most skilled craftsmen were used. इसको बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े कारीगरों को बुलाया गया था for Qutub Minar. And very few buildings were there which were made of stone, or you can say the brick. 800 years ago, बहुत पहले ये बने हैं, these buildings that were made. तो Qutub Minar and its impact, what its impact would have been on observers in the 13th century. अभी तो 21st century चल रहा है, and we get so amazed to see such an structure. 13th century में जब लोग उसको देखने गए होंगे तो वो कैसे क्या सोचते होंगे? What they might have been thinking about it. Who was going to see this in the 13th century? Okay? So you can imagine that. Now what happened between 8th to 18th century? 8th century से लेके 18th century तक what had happened? ठीक है, kings have made big buildings, big structures have been made, and the officers who were there, who were working with the king, with the ruler, they built two kinds of structures. दो तरीके के structures बनाते थे. पहले क्या था? Forts were there. Okay, two structures were there. In the first type, they used to make fort. किला, you know, big, बहुत बड़े बड़े जो किले होते हैं, I mean, रामनगर का फोर्ट देखा है, फोर्ट. So that is the fort, which is mainly for protection purpose. राजा रह रहे हैं, उनकी फैमिली रह रही है. They should be always safe and secure.
So for their safety and security, forts were built. And the other structure that was there was क्या था? Temple, mosque, the structures that were related to religion. Okay, wells were there. कारवां means like guest house. आज की डेट में हम जिसको गेस्ट हाउस कहते हैं, इन द ओल्डन डेज इट वाज कॉल्ड एज कारवां सराय. ठीक है, इसको वर्ड को ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. कारवां सराय, इसको अलग अलग समझो. कारवां मीन्स अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स. ठीक है, पहले क्या होता था, लोग ग्रुप्स में ट्रैवल करते थे क्योंकि बिकॉज देयर वेयर डेकॉइट्स, डाकू वाकू होते थे, लूट लेके जाते थे. इतना सोना चांदी उस समय लोग पहनते थे. तो दीज कैरावन्स वेयर देयर, और ये जो कारवा चलता था तो उनके ठहरने के लिए किंग्स हैव टू मेक अरेंजमेंट्स. दीज अरेंजमेंट्स दैट वेयर मेड बाय द किंग वेयर कॉल्ड एज कारवासराय. गॉट इट चिल्ड्रन? तो कारवासराय was there, temples were there, mosques, tanks, wells, bazaar. तो ये दो तरीके के स्ट्रक्चर्स थे. वन was the fort and other was the mosque, temple, कारवासराय, बाजार, हर तरीके की चीजें. तो why did they make this? ये सारी जो बिल्डिंग्स, रूलर्स ने बिल्डिंग्स क्यों बनाई? Why did they make the fort? फोर्ट तो वो खैर अपनी सिक्योरिटी के लिए बनाया. But why did they make the कारवासराय? Why did they make the temple, the mosque, the bazaar? ठीक है, market, the marketplace that they have made. तो वो क्यों बना रहे थे? Because it was the duty of the rulers. एक जो रूलर हैं उनका ये जिम्मेदारी होती थी that they have to look after the people who are living in their empire. उनके एम्पायर में जो लोग रह रहे हैं उनकी रक्षा करना, इट वॉज देयर वर्क. सो दे यूज टू मेक सच स्ट्रक्चर्स विच वॉज फॉर देयर यूज, फॉर देयर कंफर्ट. द पीपल हु आर स्टेइंग इन देयर किंगडम, राजा के राज में जो रह रहे हैं, द पीपल हु आर स्टेइंग इन द किंगडम, all their requirement should be fulfilled. Okay, so it was for their use, for their comfort. The rulers they wanted to win their praise. उनका मतलब उनकी वाहवाही लूटना चाहते थे. They always thought कि the people who are there, they should appreciate them a lot and they should praise them. तारीफ करें क्यों? Why should they always criticize the rulers? Rulers wanted popularity. वो चाहते थे लोग उनको प्यार करें. तो मर्चेंट्स वे, सो दे बिल्ड टेम्पल्स, मॉस्क, वेल, कुएं खुदवाते थे सो दैट द पीपल डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन द ड्रिंकिंग वाटर. तो द इंटरनल आर्किटेक्चर दैट वाज देयर, डोमेस्टिक, ठीक है, इंटरनल, लार्ज मैंशंस वेर देयर. Okay, try to understand that large mansions were there. Mansions were big हवेलीज, बहुत बड़े बड़े जो घर होते थे ना उसको mansion कहते थे. Mansion. It was also called as haveli. Got it? So बड़े बड़े घर बन रहे थे merchants का, and they have survived only from the 18th century. 18th century say these people have been making these kind of mansions and havelis. आज तक वो है. और मतलब they have been constructed in the somewhere in the 8th or the 9th century, 10th century. मतलब 100 साल पुरानी बिल्डिंग्स, 200 साल पुरानी बिल्डिंग्स आज तक है. So that was the major why the buildings were constructed. Please try to understand. Because the emperors, the rulers, they wanted to be very popular amongst their people. Okay, then Agra Fort was built. Another building that is very important is, एक तो हमने कुतुब मीनार है, on one place you will be finding Agra Fort. Agra Fort, किला आगरा में, big fort is there. जैसे लाल किला है,
ठीक है, किलाबंदी, किले बनते हैं, बिग फोर्ट्स वेर मेड फॉर द सिक्योरिटी. तो इट वॉज बिल्ड बाय अकबर एंड 2000 स्टोन कटर्स वेर देयर. मतलब बड़े बड़े पत्थर लग रहे हैं. तो जब बड़े पत्थर लग रहे हैं, व्हेन द बिग स्टोन्स आर इंस्टॉल्ड, so many people are there who are employed to cut the stone. 2000 stone cutters, 2000 cement and lime makers. सीमेंट भी तो चाहिए, गारा चाहिए, एंड देन चूना चाहिए, एंड 8000 लेबरर्स. ओके, सो आगरा फोर्ट में 2000 क्या थे? देयर वेर द पीपल हु वेर मेकिंग द आगरा फोर्ट, 2000 स्टोन कटर्स, 2000 cement and limestone makers, 2000 cement and limestone maker, and then 8000 laborers. Got it? 8000 laborers. तो आप ये देखो, ये समझो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. कितने सारे लोग काम करते थे ना, हाउ मेनी पीपल. और उस समय ज्यादा कुछ काम भी नहीं था, ऐसा कुछ बिजनेस तो था नहीं, देयर वाज नो बिजनेस और एनीथिंग कंस्ट्रक्शन में, बिकॉज ऑफ द पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड. पैसे तो उनको मिलते ही होंगे, दे माइट बी गेटिंग मनी, माइट बी क्या, ऑब्वियसली दिन भर काम कर रहे हैं तो पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे. तो ये था. लेकिन द पीपल हु हैव बिल्ड दीज बिल्डिंग्स, जिन लोगों ने ये बिल्डिंग्स बनाया है, what was their engineering skills? किस तरह के इंजीनियर्स रहे होंगे? इतने बड़े बड़े वास्ट मैंशंस, हाउ हैव दे बिल्ट, कैसे बनाया है? सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन चिल्ड्रन, कीप रिवाइजिंग. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू.